क्या चाहिए, नए मॉडल की जरूरत है। तो हमारे पास जो नया मॉडल बन के आया दैट वाज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आज एक नई कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो नई कहानी शुरू कहां से होती है? शुरू होती है डी ब्रॉय के कंसेप्ट से, जो कि डी ब्रॉय ने क्या कहा था? डी ब्रॉय सेड दैट द इलेक्ट्रॉन possesses dual nature. Dual nature means it will have particle nature as well as wave nature. तो उसके लिए डी ब्रॉय ने एक इक्वेशन बनाई थी दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू h by p. h is the Planck's constant and p is the momentum of the electron moving particle. तो लैम्डा जो है, लैम्डा इज कॉल्ड द डी ब्रॉयज वेव. ठीक है। अब तुम कहोगे सर इससे क्या होता है, इससे क्या प्रूव होता है? प्रूव कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ ड्यूल नेचर ही होता है। लेकिन सेम कंसेप्ट वाज फॉलोड इन 1926 by schrodinger. हाँ, तो यही सेम कंसेप्ट वाज फॉलोड बाय एरविन श्रोडिंगर. ही सेड दैट, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही कंसिडर्स इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. ही कंसिडर electron as a wave. ठीक है, अब वेव कंसिडर कर लिया इसने. तो he said that electronic waves are similar to other types of waves. Like we have light waves, electromagnetic radiations. तो यही कंसेप्ट ये मान के चला. ठीक है. And he further assumed that the electronic waves obey same types of equations. Electronic waves obey same types of equations. Of motion as other waves do. As other waves do. तो इस डेटा की मदद से इसने एक इक्वेशन बनाई, उसको हम कहते हैं श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन क्या है? इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. चलिए इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड हाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड. चलो, if I will say a wave, what comes in your mind? In your mind, a wave will come like this. This is the rest position and this is the displacement. So this is how we represent a wave. So what Erwin Schrodinger did, Schrodinger assumed that electronic waves are similar to standing waves. Standing waves या जिनको हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं. Like a wave produced by a vibration of a string. जैसे अगर कोई स्ट्रिंग हो ऐसे, इसकी वाइब्रेशन से ऐसी वेव निकलेगी, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव. चलो, या एक और डेली लाइफ एग्जांपल है. अगर हमारे पास एक रोप है, अगर मैं एक रोप पकड़ूं, दूसरी साइड से कोई दूसरा बंदा रोप पकड़े, तो अगर हम ऐसे शेक करें तो हमारे पास जो वेव बन के आएगी रोप की, वो ऐसे होगी. दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडिंग वेव. तो यही assumption किसने भी की? यही assumption श्रोडिंगर ने भी की, एंड ही डेवलप्ड एन इक्वेशन
ठीक है। तो श्रोडिंगर ने क्या एज्यूम किया, द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आर स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स एंड दे शुड ओबे द सेम इक्वेशन फॉर मोशन एज अदर वेव्स डू। तो he on this simple idea he developed an equation. The equation is written as dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m divided by x square into e minus v is e minus v psi is equal to 0. So this is called the Schrodinger wave equation. This equation represents the wave motion of electron. This equation represents the wave motion of electron. चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को श्रोडिंगर ने कैसे डिराइव किया है। एक सिंपल मैनर में इसको डिराइव करते हैं। चलिए सबसे पहले लेट्स कंसीडर द स्टैंडिंग वेव। ये एक स्टैंडिंग वेव है, या यू कैन से इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वेव बिकॉज श्रोडिंगर कंसिडर्ड द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एज स्टैंडिंग वेव्स। और ये डिस्प्लेस हो रही है एक्स डायरेक्शन, या ऐसे हम कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन। चलिए लेट द psi represent the amplitude of the wave and x represents the displacement of wave in x direction। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि एवरी वेव इज characterized by a wave function which gives us all the information about the wave। तो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन जो है दैट इज psi, और psi is equal to a sin 2 pi x by lambda, a sin 2 pi x by lambda। Let's name this as equation first। चलिए किसी कंक्लूजन पे आने के लिए हम इस पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to x, तो we get, बस ध्यान रखिए थोड़ा सा, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है इसका। सो दिस विल बिकम d psi by dx is equal to a sin वैल्यू डिफरेंशिएट होता है दैट्स cos 2 pi x डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन भी होगा, तो ये बन जाएगा 2 pi by lambda। Yeah, you can write it as d psi by dx is equal to 2 pi a divided by lambda into cos 2 pi x by lambda। Again differentiating यानी कि जिसको हम डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, differentiating the above equation with respect to x। So we will get d square psi, dou square psi by dou x square plus is equal to 2 pi a by lambda, cos का हो गया माइनस साइन 2 pi x डिवाइडेड बाय lambda, फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, so we will get 2 pi by lambda। Now, so the equation becomes d square psi by dx square is equal to,
इसको इधर लगाओ तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर. 2 2s are 4. Pi into pi is pi square and lambda into lambda is lambda square. Lambda square into minus sine 2 pi x by lambda. So we can write it also d square psi by dx square is equal to minus 4 pi. Sorry, you need to put here 4 pi square lambda square into a sine 2 pi x by lambda. So let's name this equation. Let's name this equation second. Let's name this equation second. So we can compare equation first and equation second. You can see that a sine 2 by x by lambda is equal to psi. So यहाँ पे भी a sine 2 by x by lambda. So the equation can be written as d square psi by dx square is equal to minus 4 pi square by lambda into psi. So let's name this equation third. चलिए अगेन यूजिंग डी ब्रोगली's concept. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली's concept, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली's concept, lambda is equal to h by p. ठीक है, और I can write it as lambda square is equal to h square by p square on squaring both sides. ठीक है, या it can be written as lambda square is equal to h square divided by mv square. mv square. चलिए, so again kinetic energy of the electron is given by half of mv square. So if I write it as kinetic energy is equal to half of m square v square divided by m. कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. m and m one square will get cancelled out and we will get the same result back. Half of mv square. So this can be written as, अगर हम इसको 2m को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करें तो this will become 2m ke is equal to m square v square, or we can say 2m ke is equal to mv square. ठीक है, तो चलिए यहां पे अगर हम इस इक्वेशन का नाम दे दे इक्वेशन फोर्थ, and if we keep this equation fifth. So again comparing fourth and fifth, we get from fourth and fifth we get शाबाश. तो lambda square is equal to h square by mv square. mv square के बदले 2mv. So we will get lambda square is equal to h square divided by 2mke. ठीक है, चल तो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये. लैम्डा स्क्वायर. तो चलिए इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 6. तो क्या हम 6th और 3rd को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. दिस इज लैम्डा स्क्वायर हियर, लैम्डा स्क्वायर हियर. सो वी कैन सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर हियर. तो सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ
lambda square in equation थर्ड। ठीक है, चलिए देखते क्या बनता है। तो ये बन जाएगा टू स्क्वायर साइन बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2m के ई। ठीक है, तो यहां पे अगेन इनटू साइन, या इट विल बिकम 4 2s are 8, it will become 8 pi square m divided by h square into ke into sin, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 2 into 4 is 8 and m 2 pi square m by h। तो अगेन अगर हम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखें तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, kinetic energy plus potential energy, or we can say kinetic energy is equal to total energy minus potential energy, total energy minus potential energy. So we can say that dou square psi by dx square is equal to minus 8 pi square m divided by h square, और kinetic energy के बदले E minus v into psi। ठीक है, तो इस पूरे साइड को हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा डो स्क्वायर साई डिवाइड बाय dx स्क्वायर इज प्लस प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इनटू e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम किया था द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज इन x डायरेक्शन, तो ये एक ही डायमेंशन के लिए ये इक्वेशन होगी, एक ही डायमेंशन के लिए इक्वेशन। वी कैन एक्सटेंड इट इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, चलिए इसका नाम इक्वेशन 7 रखते हैं। सो इक्वेशन 7 can be extended in 3D by replacing dou square psi by dou x square with, किससे रिप्लेस करेंगे शोभाष? dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव मोशन आएगी, इक्वेशन फॉर वेव मोशन आएगी, दैट विल बी इन 3D, दैट विल बी इन 3D। सो वी कैन राइट इट एज देयरफॉर द फाइनल इक्वेशन विल बिकम dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou z dou y square, sorry, plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m divided by h square into e minus v psi is equal to 0। तो ये आ गई हमारे पास वेव मोशन, यानी इक्वेशन फॉर वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो ये लंबी चौड़ी इक्वेशन जो है, इसको हम कहीं और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन इवन राइट इट इन शॉर्टर फॉर्म्स, जैसे यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं अदर फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, सो एक फॉर्म जो है नंबर फर्स्ट, दैट इज दिस del square psi plus 8 pi square m divided by h square into e minus v is equal to 0। ठीक है, जो ये del है, del square, it's often represented by this del into del, या इसको हम nebula भी कहते हैं, we call it nebula। So this is called, or del square simply, this is called a Laplacian operator।
Laplacian mathematical operator. एक और फॉर्म है, इससे भी शॉर्टर फॉर्म, दैट इज एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच साई इज इक्वल टू ई साई। दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इट रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो आई होप कि आज का जो लेक्चर है ये सबको क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह टुमारो वी आर गोइंग टू टेक क्वांटम नंबर्स। सो हैव अ गुड डे।